Many people have, as I can see that many people have already joined. So let us start the session. A very warm welcome to everyone who has joined the session. And let me start the session with my introduction. I am CA Jay Arora, a qualified chartered accountant. I am currently engaged in the domain of internal audit with one of the topmost CA firm. So today's session is regarding intricacies involved in GST assessment and income tax reassessment. So today's session has been organized by FIEA, which is the Federation of Indian Economic Affairs. It is basically an organization that is engaged in continuous knowledge sharing and professional development. They always try to update the knowledge of our fellow professionals and try to uplift the profession for the benefit of all. Now, I will like to invite Mr. Uttam Modi, who is the facilitator of this session. Mr. Uttam Modi is engaged in practice from a long while, and he is a good extensive experience in auditing and taxation. So now over to you, Mr. Modi. थैंक यू जय भाई। सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूंगा सबका। मोहित सर आपका वेलकम। विमांशु सर भी हमारे साथ हैं, आपका वेलकम। एंड सारी ऑडियंस हमारे मॉडरेटर सबका वेलकम करना चाहूंगा। और बेसिकली फिया क्या है, अगर मैं बात करूं तो फिया एक ऑर्गेनाइजेशन बनी है हम सब के लिए, हम सब की ऑर्गेनाइजेशन हम सब के लिए, जो कंटिन्यू काम कर रही है नॉलेज शेयरिंग और नॉलेज एनहांसमेंट के लिए। सैटरडे 4 से 6 जनरली हम लोग हर सैटरडे को सेशन करते हैं और कोशिश करते हैं कि कुछ न कुछ नॉलेज को अपडेट किया जाए। तो इसी के लिए फिया का फाउंडेशन हुआ है। और मैं चाहूंगा कि आप सब लोग भी नॉलेज शेयरिंग में हमेशा कंट्रीब्यूट करते रहें, और अगर आपका कोई फीडबैक हो तो जरूर शेयर करें। आज का जो हमारा ये प्रोग्राम है वो बेसिकली इनकम टैक्स रीअसेसमेंट, और फर्स्ट सेशन जो है वो हमारा होने वाला है जीएसटी असेसमेंट पर। ऑल्दो हम सबको पता है कि जीएसटी के असेसमेंट्स अभी मतलब किस कैसे चल रहे हैं, क्या क्या मतलब प्रॉब्लम्स आ रही है, तो बस उन प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करना है, कैसे जीएसटी असेसमेंट्स को देखना है, वो सारी चीजें हमें मोहित सर गाइड करेंगे। तो मैं मोहित सर की तरफ जाने से पहले एक बार हमारे साथ पिया के प्रेसिडेंट सी अभिषेक जैन जी भी अवेलेबल हो चुके हैं, तो मैं उनको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। सी अभिषेक जैन जी बेसिकली पिया के प्रेसिडेंट है और अवेलेबल रहते हैं हमेशा नॉलेज शेयरिंग के लिए। वेरियस प्लेटफॉर्म्स पर उनके वीडियोस और आर्टिकल्स वगैरह अवेलेबल है, जीएमसीएस ओपी और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर वो हमेशा नॉलेज शेयरिंग करते रहते हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं सी अभिषेक जैन जी को इनवाइट करना चाहूंगा। थैंक यू उत्तम भाई। थैंक्स अ लॉट मोहित भाई और भीमांशु जी। थैंक यू जय भाई और मानसी। थैंक यू फिया। और आई होप कि हम जो ये सेशन है uh, बड़े इंटरेक्टिव तरीके से अटेंड करेंगे। और जहाँ तक मैं समझता हूँ मोहित भाई का जो सेशन होगा बड़ा ही इंटरेक्टिव होगा, और हम सभी को इवन सेशन के बाद ये वीडियो भी सेंड करने वाले हैं, और बाद में जो सर्टिफिकेट जैसे कि हम देते आए हैं, हम सेशन के बाद में सभी को सर्टिफिकेट भी सेंड करेंगे। और ये लिंक सेशन के खत्म होने के 2 या 3 घंटे बाद आप यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हो। थैंक्स अ लॉट उत्तम भाई, और होपफुल कि हम इस सेशन को एंजॉय करेंगे। थैंक यू फ्रॉम माय साइड। थैंक यू जय भाई, ओवर टू Thank यू। you, sir. So today we have two speakers. Our first speaker is Mr. Mohit Golcha ji and second speaker is Mr. Bhimanshu Kansal ji. So I would like to introduce our distinguished speaker, our first speaker, Mr. Mohit Golcha ji. Mr. Golcha is a fellow chartered accountant, a law graduate, and a certified GST practitioner with over a decade of experience in the domain of taxation. He became a member of Institute in 2010 and holds a bachelor's degree in commerce from Delhi University. Currently, he is a partner in GST domain at AGMS and Company Chartered Accountants. Mr. Golcha is widely recognized for his in-depth expertise in GST laws and has authored the insightful book titled Refund in GST, Much Wider Scope Than You Thought. In addition to his professional accomplishments, Mr. Golcha is a renowned corporate GST trainer and a guest faculty at several prestigious institutes, industry associations, and even the Central Excise Revenue Audit, that is SERA. His seminars and workshops are known for simplifying complex GST concepts and offering practical clarity. Beyond his professional life, he is also a passionate sportsman with a special love for cricket.
We are truly honored to have him with us today. So, without further ado, let's welcome Mr. Golcha to take us through today's session. Over to you, sir. First of all, let me thank FIEA for giving me the opportunity in order to express my views in respect of the assessment. और आज क्योंकि टॉपिक दोनों ही असेसमेंट्स के हैं, इनकम टैक्स की असेसमेंट हो या जीएसटी की असेसमेंट, तो बिफोर वी स्टार्ट लेट मी स्टार्ट माय पीपीटी. तो असेसमेंट से फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज क्या आती है? क्या स्कूल में कभी असेसमेंट थी? सर सॉरी टू इंटरप्ट सर, आपका वॉइस थोड़ा सा कम आ रहा है. अब ठीक आ रहा है? हाँ अब ठीक है सर. Let me- अब ठीक है? Yes, जी sir. जी अब ठीक है सर. तो असेसमेंट जब मन में आता है तो पहली बार असेसमेंट कब सुना था? स्कूल में था कभी असेसमेंट्स? मतलब असेसमेंट क्या है कि भाई जो मैंने किया वो ठीक किया या नहीं किया. और जीएसटी में भी यही कहा है कि जो तुमने कर दिया उसके बाद हम चेक करेंगे. तो उसमें भी सीनियरिटी और ग्रेड कैसे इन्होंने बनाए. पहले तो कहा जो करा तुम करो सेल्फ असेस और अपने हिसाब से रिटर्न भर दो. तो स्कूल में भी जब अपने थे पहले हम खुद असेसमेंट्स करते थे, उसके बाद टीचर को देते थे, तो टीचर असेसमेंट चेक करती थी बेस्ड ऑन दी एग्जामिनेशन विच वी हैव फिल्ड. तो जीएसटी में क्या हुआ, एग्जामिनेशन कौन सा हुआ? जब हम अपनी रिटर्न सबमिट कर देते हैं तो वो आंसर शीट सबमिट हो गई. अब उसमें हमने क्या चेक करना है कि फर्स्ट सेल्फ असेसमेंट, सेकंड ऑफिसर असेसमेंट करता है उस बच्चे का या उस स्टूडेंट का जो क्लासरूम में अवेलेबल था. और एक असेसमेंट हम डिस्कस करेंगे जिसे हम कहेंगे बेस्ट जजमेंट असेसमेंट. किसी ने कोई आंसर शीट सबमिट नहीं करी, उसके बेसिस पे, उसके परफॉर्मेंस के बेसिस पे, उसके एविडेंसेस के बेसिस पे हमें असेसमेंट करनी है. एंड द लास्ट लेग जो असेसमेंट की जब हम डिस्कशंस करेंगे तो वो कौन होगा? वो व्यक्ति जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं. तो ब्रॉडली अगर हम असेसमेंट्स की बात करें, एक वो जो जीएसटी में है और एक वो जो जीएसटी में नहीं है, बट दोनों की असेसमेंट हमें करनी है. तो असेसमेंट किन भागों में बटा हुआ है? सेक्शन 59 से शुरू होती है असेसमेंट और कहां तक कंप्लीट होती है? 64th. तो ये ब्रॉड आई व्यू एक हमें समझ में आता है कि असेसमेंट मूव कैसे करेगी. तो हल्का हल्का सा मैं टच बेस करता हूं इन टर्म्स टू एक्सप्लेन कि हम आगे क्या पढ़ेंगे. जैसे मैंने स्टार्ट में बोला, सेल्फ मतलब मुझे करनी है. तो पहली असेसमेंट जब भी होगी वो मुझे करनी है. तो मैंने अपनी आंसर शीट सबमिट कैसे करी? बाय फाइलिंग दी जीएसटी रिटर्न्स. सेकेंडली देयर इज अ प्रोविजनल असेसमेंट. ये किस लिए लगेगा? वो असेसमेंट जहां मुझे नहीं समझ में आ रहा कि टैक्स क्या होना चाहिए, वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो मैं कहीं ना कहीं सपोर्ट ले सकता हूं. देन स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स, ये भी एक असेसमेंट है. ये असेसमेंट कब चलेगी? जब मैंने अपनी रिटर्न सबमिट कर दी है या मैंने अपना जितना भी इंफॉर्मेशन जो मैंने गवर्नमेंट को शेयर कर दिया है थ्रू जीएसटी पोर्टल, या मेरे सप्लायर ने कोई इंफॉर्मेशन दे दी है, सो तो बेस्ड ऑन दोज इंफॉर्मेशन मेरी सबमिटेड इंफॉर्मेशन को स्क्रूटनाइज किया जाए. एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि मेरा जीएसटी 2A 2B, मेरा ई वे बिल, मेरी इनकम टैक्स रिटर्न, या कोई भी ऐसा डोमेन विच इज अवेलेबल ऑन द रिकॉर्ड और विच इज अवेलेबल ऑन द पोर्टल, बेस्ड ऑन दैट द स्क्रूटनी वुड बी डन. अब मैंने रिटर्न ही नहीं दी, तो उस केस में क्या होगा? असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न. तो हम उसमें अपॉर्चुनिटी देंगे कि भाई आप रिटर्न भर दो और जो भरोगे उसके बेस हम आपकी असेसमेंट करते हैं. देन एक और कैटेगरी क्या निकल के आई? वो व्यक्ति जो रजिस्टर्ड ही नहीं है जीएसटी में, बट ही वॉज लाइबल टू गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड. तो उनको हम क्या कहेंगे? पहले हम उनको जीएसटी में रजिस्टर कराएंगे, फिर उनकी असेसमेंट्स करेंगे. इन दी लास्ट वन जो हम लास्ट बिल्कुल टच करेंगे, समरी असेसमेंट. ये कब होती है? ये तब होगी, ये किसी भी व्यक्ति की हो सकती है, चाहे वो रजिस्टर्ड व्यक्ति हो चाहे वो अनरजिस्टर्ड व्यक्ति हो. ये कौन से सिचुएशंस में होगी? जब ऑफिसर को लगेगा या असेसिंग अथॉरिटी को लगेगा कि यस, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू वी आर सपोज टू डू दी समरी असेसमेंट. और ये क्या होती है? क्विक असेसमेंट्स हो जाती है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन विच दे हैव. ऑन दैट बेसिस द असेसमेंट वुड बी डन.
हम चैट बॉक्स का भी यूज करेंगे, जिसको जहां पर भी कोई चैलेंज आ रहा हो जिस स्लाइड में, वो स्लाइड के यहां पर अपना पॉपअप कर देगा एंड वी विल ट्राई टू एड्रेस दी क्वेश्चन। असेसमेंट का रिजल्ट क्या है? जैसे स्कूल में पेपर देते थे तो क्या होगा, या तो पास या फेल। तो असेसमेंट से निकलेगा क्या? या तो टैक्स नॉट पेड निकलेगा, शॉर्ट पेड, ज्यादा ले लिया रिफंड, या आईटीसी अवेल्ड और रॉन्गली यूटिलाइज। तो ब्रॉडली अगर मैं डिस्कशन करूंगा, ये चार हेड्स हैं। पूरा टैक्स जो टिका हुआ है, अगर ये चार होते हैं तभी असेसमेंट्स की कहानी शुरू होती है, तभी स्क्रूटनी की कहानी शुरू होती है। ये चारों क्या है? अच्छा, एक कौन सी चीज है अगर वो सबसे बेस्ट हो जाए तो ना कोई असेसमेंट्स ना कोई स्क्रूटनी, तो कोई अटेम्प्ट करना चाहेगा वो इन चारों को देखते हुए कौन सी सिनेरियो सबसे बढ़िया होगा? चैट बॉक्स आप यूज करें, मैं ऑप्शन देता हूं, ऑप्शन ए सब कुछ सही है, मतलब टैक्स विच वाज सपोज टू बी पेड एंड हैज बीन पेड। So in that case, will there be any scrutiny of it, or will there any be 73, 74? तो दिस थिंग्स वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो मेरा रिजल्ट है, अल्टीमेटली हम सब प्रोफेशनल जो काम कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इंश्योर टैक्स नॉट पेड ना हो, शॉर्ट पेड ना हो, एरोनियसली रिफंडेड ना हो, आईटीसी जो लिया है वो प्रॉपर लिया हो, और उसको यूटिलाइज भी प्रॉपर तरीके से करना। अगर ये सिनेरियो है तो बेस्ट असेसमेंट है हमारी, नहीं तो स्क्रूटनी असेसमेंट, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट और सारी तरीके की असेसमेंट हमारे लिए हो जाएगी। अच्छा, अब क्या सिनेरियो बनेगा? सिनेरियो नंबर 1 समझने के लिए अगर समझते हैं हम, तो क्या बनेगा कि अगर असेसमेंट के दौरान मेरी क्या सिचुएशंस हुई, ये चार सिचुएशंस हुई, तो रिकवरी कैसे होती है? 73, 74 के माध्यम से। और अब नया एक सेक्शन कौन सा आ गया है? 74A, जो 73, 74 को मर्ज कर दिया है, न्यू सेक्शन इंसर्ट कर दिया 74A। तो उसके कंटेक्स्ट में दे वुड बी आस्किंग अस टू पे दी टैक्सेस। अदर देन 73, 74 कौन से हुए? वो व्यक्ति जिसने रिटर्न नहीं भरी, तो उसमें तो 73, 74 हो नहीं सकता, क्योंकि डिटर्मिनेशन के लिए आपको रिटर्न्स तो चाहिए। तो उसमें कौन सा यूज होगा? सेक्शन 62। वो क्या होगा? बेस्ट जजमेंट। सेक्शन 63 टॉक्स अबाउट ऑल दोज अनरजिस्टर्ड पर्सन, जो जीएसटी में अगर रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो 73, 74 तो इन्वोक नहीं होगा। तो उसके लिए क्या बनाया उन्होंने? सेक्शन 63 एज वेल एज समरी असेसमेंट। समरी असेसमेंट मैंने क्या बोला? कोई इंस्टांस हुआ जहां पर ऑफिसर को लग रहा है that there is a need to protect the interest of the revenue, so he may do the summary assessment, but subject to following the procedures. तो अब दोस्तों एक काम करते हैं, एक एक असेसमेंट को जो हमने डिस्कस करी है, लेट अस सी कि असेसमेंट का मतलब क्या होता है। असेसमेंट का मतलब क्या है? कि डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, जो मेरी टैक्स लायबिलिटी है वो एज पर एक्ट है या नहीं। अगर वो एज पर एक्ट है तो अच्छी बात है, अगर वो एज पर एक्ट नहीं है तो कहीं ना कहीं फिर मेरी स्क्रूटनी ऑफ असेसमेंट्स और बाकी सारी चीजें हो जाएंगी। तो जब मैं असेसमेंट्स की डिस्कशंस कर रहा हूं, तो इन लेग्स पे मेरे को समझना है सेक्शन 2 सब क्लॉज 11 के अंदर कि 59 से लेके 64 तक में वो सारी चीजें फिटमेंट आ जाए। तो सबसे बेस्ट असेसमेंट है सेल्फ असेसमेंट। हमें ध्यान रखना है कि हम जब असेस करें, जब खुद सेल्फ असेस करें, तो इट शुड बी अ करेक्ट टैक्स लायबिलिटी। और टैक्स लायबिलिटी करेक्ट कैसे? इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रोविजंस व्हिच हैज बीन इनैक्टेड इन द जीएसटी लॉ। तो पहला जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो हमें क्या समझना है? सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे दी? रजिस्टर्ड पर्सन को। उसको क्या करना है? based on the information, based on the supply which he has made, based on the supply which he has received, he has to make a correct assessment. तो वो क्या करेगा? अपने हिसाब से करेक्ट असेसमेंट करेगा, कंसिडरिंग एवरी फैक्ट, कंसिडरिंग द इंफॉर्मेशन विच ही हैज शेयर्ड विद द डिपार्टमेंट। उसके बेस पे आउटपुट माइनस इनपुट करके वो टैक्स लायबिलिटी निकालेगा। और जो उसकी पीरियोडिक रिटर्न्स है, चाहे वो मंथली हो चाहे वो क्वार्टरली हो, ही हैज टू फाइल दीज रिटर्न्स इन अ प्रॉपर मैनर। प्रोविजनल असेसमेंट। तो प्रोविजनल असेसमेंट में क्या होगा?
प्रोविजनल असेसमेंट में कब करवाऊंगा? इन टर्म्स जब मेरे को ये नहीं पता चल रहा दैट आई एम नॉट एबल टू डिटरमाइन द वैल्यूज। एक सेकेंड, हाँ, और सर आपका वॉइस नहीं आ रहा है। हाँ, हाँ, एक सेकेंड। आई थिंक तो पीपीटी इज विजिबल। नहीं सर, अभी नहीं सर, तो नहीं। पीपीटी अभी नहीं आ रही। वो आपको एक बार डिस्प्ले कर दो सर, शेयर कर दो। अब हाँ, आ अब अगेन विजिबल है अब सर। तो हम बात अभी कर रहे थे प्रोविजनल असेसमेंट्स की। तो प्रोविजनल असेसमेंट्स कब होगा हमारा? In order to understand provisional assessment where I am not able to identify or where I am not able to certain that what would be the tax rate and what would be the value, तो उस केस में क्या होगा? मुझे एक प्रोसेस फॉलो करना है। मुझे किसके पास जाना पड़ेगा? मेरे को अपने ऑफिसर के पास जाना पड़ेगा। तो ऑफिसर के पास सबसे पहले मैं एक एप्लीकेशन मूव करूंगा ASMT 01 के। उसमें मैं बोलूंगा वॉलेंटरली कि दैट आई एम फेसिंग दिस चैलेंज दैट आई नीड टू नो दैट व्हाट इज द रेट एंड व्हाट इज द वैल्यू while supplying those goods or services। तो ASMT 1 में एप्लीकेशन मूव होगी। बेस्ड ऑन माय एप्लीकेशन द ऑफिसर while adjudicating while doing the assessment, अगर उसको लगता है कि कुछ इंफॉर्मेशन और चाहिए या कुछ इंफॉर्मेशन में डिस्क्रिपेंसी है, तो देन इन ऑर्डर टू सीक दोज इंफॉर्मेशन वो ASMT 2 मूव कर देगा। ASMT 2 मूव करने के बाद क्या होगा? मेरे पास अपॉर्चुनिटी आएगी इन ऑर्डर टू सी कि क्या इंफॉर्मेशन ऑफिसर ने मांगी है, उसके बेस पे मुझे ASMT 03 के अंदर रिप्लाई कर देना। अब क्या हुआ? उसके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ गई ऑफिसर के पास। बेस्ड ऑन दैट ही मे पास अ प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर। प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर क्या होता है? विच इज नॉट द फाइनल ऑर्डर। तो प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर उसे कितने टाइम में पास करना है? विद इन 90 डेज ऑफ द फाइलिंग ऑफ द डेट ऑफ एप्लीकेशन। अब प्रोविजनल असेसमेंट में क्या होगा? क्योंकि ऑफिसर वाज नॉट एबल टू एजुडिकेट और डू द असेसमेंट इन अ फाइनल वर्जन, इन ऑर्डर टू इंश्योर कि ऐसा ना हो कि भाई रेवेन्यू को कोई नुकसान हो जाए, उसको कवर करने के लिए ही में आस्क द रजिस्टर्ड पर्सन टू फर्निश द बॉन्ड एंड सिक्योरिटी। और वो बॉन्ड एंड सिक्योरिटी किसमें सबमिट करनी पड़ेगी? ASMT 05 के अंदर। ASMT 5 के बाद उसने बॉन्ड सिक्योरिटी दे दी, देन ही में सीक द इंफॉर्मेशन फॉर द असेसमेंट। अब वो फाइनल असेसमेंट की तरफ मूव कर रहा है। तो फाइनल असेसमेंट के लिए फिर एक और वो नोटिस मूव करेगा ASMT 6 के अंदर। बेस्ड ऑन दैट ही वुड बी पासिंग अ फाइनल ऑर्डर अंडर द ASMT 07। अब क्या हुआ? क्योंकि मैंने सबसे पहले क्या जमा करा रखा था? मैंने सिक्योरिटी और बॉन्ड जमा कर रखे थे। तो अब उसको रिलीज करने के लिए तो मुझे क्या मूव करनी पड़ेगी? एप्लीकेशन फॉर रिलीजिंग दी सिक्योरिटी। तो मैं ASMT 07 के अंदर, ASMT 08 के अंदर आफ्टर गेटिंग माई फाइनल असेसमेंट ऑर्डर मैं कहूंगा मेरी आप सिक्योरिटी रिलीज कर। एंड लास्ट जब मेरी एप्लीकेशन चली गई उसके बाद क्या मिल जाएगा मेरे को? ऑर्डर फॉर रिलीज ऑफ सिक्योरिटी। तो ये मैंने अभी क्या करा, पूरा जो सेक्शन, अभी मैं सेक्शन, ये जो पूरी प्रेजेंटेशन जब आपको मिलेगी तो आप देखेंगे सेक्शन या जो एक्ट में जो पोजीशंस लिखी हुई है वो मैंने पीछे लिख दी है। और बेस्ड ऑन दैट आई हैव ट्राइड टू समराइज दैट व्हाट द सेक्शन वांट्स टू से टू यू एंड व्हाट द रूल वांट टू से, सो दैट जब आप प्रैक्टिकली काम करेंगे तो यू वुड बी फाइंडिंग इट इन अ यूजफुल मैनर कि मुझे करना क्या है। तो इसके कंटेक्स्ट में अगर किसी का कोई सवाल है तो वो चैट बॉक्स में पूछ सकता है, नहीं तो वी आर मूविंग फॉरवर्ड। सो दिस इज द एक्ट which is there, which has been written in the CGST Act or GST Act।
उसके बेसिस पे सेक्शन 60 की ये टैबुलर प्रेजेंटेशंस आप लोगों के सामने मैंने अभी प्रेजेंट कर दी, इन ऑर्डर टू एंश्योर कि आपको सेक्शन 60 इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स आपको क्लैरिटी से समझ में आ जाए. Now the most important scrutiny which we all foresee on a day-to-day basis. इसको क्या कहा? ASMT 10 सेक्शन 61 के अंदर जो हमारी स्क्रूटनी होती है, जिसके सबसे ज्यादा नोटिस हमारे पास आते हैं. अच्छा, इसमें क्या होगा? डिस्क्रिपेंसी कहां से? जीएसटी एक्ट में सबसे बेस्ट पार्ट क्या है? जो भी डिस्क्रिपेंसी आएगी दैट वुड बी बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन which you have provided or either your supplier has provided. इन दोनों इंफॉर्मेशन को still not audible. अब इसका क्या सोल्यूशन करें? सर आवाज आ रही है बसंत सर? आई थिंक कैन पे शायद माइक धीरे होगा स्पीकर ना. अच्छा ठीक है. हाँ जी. तो स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न, तो ये एक प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी भी है. इन टर्म्स वी नीड टू अंडरस्टैंड कि दैट स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न में ऑब्जेक्टिव क्या है. और आप देखेंगे जीएसटी में एक चीज, सारा प्रोसेस बाउंड है और कहीं ना कहीं हर एक स्टेप के लिए दे हैव डिजिग्नेटेड अ सेपरेट. तो स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा? एएसएमटी 10. और वो एएसएमटी 10 आपको बताएगा दैट व्हाट आर द डिस्क्रिपेंसी इन द इंफॉर्मेशन विच यू हैव फर्निश्ड. तो आप ही की इंफॉर्मेशन को असेस किया जाएगा, आप ही की रिटर्न से, एंड बेस्ड ऑन दैट they would be saying that these are the discrepancies. For example, he may say कि GSTR 1 में आपने 10 लाख रुपए दिए हैं, while GSTR 3 is showing only 9 lakh rupees. So there would be a discrepancy of 1 lakh where he would be stating that you have paid lesser tax. Now he would be seeking the application, seeking the notice where he would be asking you that why 1 lakh should not be added based on the information which they have received in the portal. अब हर एक प्रोसेस के अंदर दे हैव इंश्योर्ड दैट देयर इज अ प्रॉपर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड हैज बीन प्रोवाइडेड. तो इसमें क्या होगा? एएसएमटी 10 आएगा, आप अपनी बात कह सकते हो किसके माध्यम से? एएसएमटी 11 के. अगर ये सब सेटिस्फैक्ट्री है तो क्या होगा? ड्रॉप. क्या चीज ड्रॉप हो जाएगी? ये जो एएसएमटी 10 है, इट वुड बी ड्रॉप्ड. बेस्ड ऑन दैट ही वुड इशू यू एएसएमटी 12. अब दूसरी सिचुएशन भी होगी, या तो वो पास होगा या फेल होगा. दैट इज रिप्लाई जो सबमिट. Everyone, please keep your mics on mute. रिप्लाई जो है वो It सेटिस्फैक्ट्री creates भी हो सकता है, disturbance. नॉट सेटिस्फैक्ट्री भी हो सकता है. अगर सेटिस्फैक्ट्री हुआ तो एएसएमटी 12 प्रोसीडिंग क्लोज. रिप्लाई नॉट सेटिस्फैक्ट्री एज वेल एज रिप्लाई नॉट सबमिटेड, मतलब मैंने सबमिशन दिया वो समझ में नहीं आ रहा, और एक सूरत में मैंने सबमिशन दिया ही नहीं. इन दोनों सिनेरियोस को अगर मैं समझूंगा तो मेरे साथ क्या हो सकता है कि आइदर द डिपार्टमेंट में प्रोसीड फॉर डिपार्टमेंटल ऑडिट अंडर सेक्शन 65, स्पेशल ऑडिट हो सकती है, सर्च हो सकता है, सीजर हो सकता है, इंस्पेक्शन हो सकता है, एंड 73, 74 और 74A के अंदर there could be a show cause notice which may be issued to the registered person seeking the information in respect of the discrepancies which they have. टाइम लिमिट क्या है? टाइम लिमिट इन ऑर्डर, जैसे ही मेरे पास ये एसएमटी 10 आएगा तो आई नीड टू इंश्योर दैट विद इन 30 days आई एम सपोज टू furnish my reply and upload it on the portal. ध्यान रखिएगा, जब भी आप ASMT 10 का रिप्लाई दें वो रिकंसिलेशन बेस्ड है, एंड मेक श्योर कि वो प्रॉपर तरीके से आप रिप्लाई सबमिट करें. और ये इनिशिएशन है, मतलब असेसमेंट की, स्क्रूटनी की और आगे की लिटिगेशन की जो जर्नी है वो यहां से शुरू होगी. तो जो भी फैक्ट्स हैं मेक श्योर वो आप प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड कर दें. This is the act which they have stated. Based on this, I have tried to prepare a tabular presentation or a flow chart in order to understand the intricacy of the section 61. This is followed with rule. Now let us come to the positions कि जहां पर रिटर्न्स नहीं भरी. ऐसे भी सिनेरियोज हो सकते हैं जो हमने प्रैक्टिकली अभी
8 साल की जर्नी में देखा कि लोगों ने रिटर्न्स नहीं भरे, बट ये व्यक्ति तो रजिस्टर्ड था, रिटर्न्स नहीं भरी किसी भी वजह से। तो अगर उसने रिटर्न नहीं भरी, चाहे वो रेगुलर रिटर्न हो चाहे वो फाइनल रिटर्न हो, हमने मैक्सिमम ज्यादातर केसेस में क्या देखा, लोग कैंसिलेशन तो अप्लाई कर देते हैं बट भूल जाते हैं इसकी फाइनल रिटर्न। कई बार क्या होता है, जो रूटीन में जो रेगुलर रिटर्न जानी होती है वो व्यक्ति भी भूल जाता है। सो इन बोथ दी केसेस जहां पे नॉन फाइलिंग है, चाहे रेगुलर रिटर्न्स हो चाहे वो फाइनल रिटर्न्स हो, उन दोनों ही सिनेरियो में आपको प्रॉपर ऑफिसर पहले नोटिस भेजेगा, कहेगा कि भाई साहब आपने रिटर्न्स नहीं भरी है, तो आप इस रिटर्न को प्रॉपरली विद इन 60 डेज टाइम के अंदर आप इसको सबमिट कर दें। तो नोटिस जो आएगा वो किस में आएगा, GSTR 3A के। अब क्या सिनेरियो होगा, अगर आप गुड स्टूडेंट होगे तो आप फाइल कर दोगे और आपकी असेसमेंट ड्रॉप हो जाएगी। देन देयर कुड बी अ सिनेरियो कि यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द नोटिस विच हैज बीन इशूड बाय द प्रॉपर ऑफिस। तो उन सिनेरियो में क्या होगा, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन विच द प्रॉपर ऑफिसर हैज, ऑन दैट बेसिस ही विल मेक अ बेस्ट जजमेंट ऑर्डर। अब इसमें एक चीज आप लोगों को सबको ध्यान रखनी है, जब मैं इस सेक्शन की बात कर रहा हूं तो ये सेक्शन स्टार्ट कैसे होता है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्ररी कंटेंट 73, 74, 74, उनमें कुछ भी लिखा हो, हम इसके लिए एक स्पेसिफिक पोजीशंस ले सकते हैं। तो ये एक स्पेशल सेक्शन है, अगर ये स्पेशल चीजें होंगी यहाँ पर तो दिस वुड बी मूव्ड। तो ये नॉन फाइलिंग का कब तक वो ऑर्डर पास कर सकता है, विद इन 5 years फ्रॉम द डेट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 44। तो ASMT 13 फॉलोड विद DRC 07 में आपके पास ऑर्डर आ जाए। ऑटोमेटिक असेसमेंट भी विड्रॉ हो जाएगी, सब्जेक्ट टू टू थिंग्स, दैट विद इन अ टाइम इन विच यू वर सपोज टू रिप्लाई, और विद इन अ टाइम विच हैज बीन स्टेटेड इन द नोटिस कि आप इतने टाइम में रिटर्न भर देना, अगर आपने भर दी तो वो सुओ मोटो ड्रॉप हो। एक नया प्रोविजन ऐड हुआ 1 अक्टूबर 2023 में, एक ये अच्छा प्रोविजन भी है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि कई बार क्या होता था 60 दिन एक्सीड हो जाते थे, तो ये कह रहे कोई दिक्कत नहीं, अगर 60 दिन भी एक्सीड हो गए तो हम आपसे 100 रुपए प्रतिदिन ले लेंगे, और उसके बाद अगर आपने रिटर्न भर दी तो जो भी आपका 100 रुपये पर डे के हिसाब से है आप भर दीजिए, तो हम डीम्ड विड्रॉ इसको मान लें। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और इसमें आपको ध्यान रखना है, जो लेट फी है वो लगेगी, इंटरेस्ट एंड लेट फी अकॉर्डिंगली जो भी बनेगा वो आपको पे करना पड़ेगा। अब ये भाई साहब कौन है, कि जिनको रजिस्ट्रेशन लेना था बट दे हैवंट टेकन, तो ये कौन से हो गए, अनरजिस्टर्ड व्यक्ति। तो किस सिनेरियो में होगा, सपोज मेरी टर्नओवर एक्सीड कर गई सर्विसेज के केस में 20 लाख, so in that case I was liable to take the registration but I have failed to take the registration. तो इन सिनेरियो में क्या होगा, बीइंग एन अनरजिस्टर्ड पर्सन आई नीड टू रिकवर द टैक्स, तो इन दीज केसेस दिस प्रोविजन वुड बी अप्लाइड। देन आई नीड टू अंडरस्टैंड कि कई बार अभी आप लोगों ने ये देखा है इस दौरान के अंदर दैट डिपार्टमेंट हैज कैंसिल द रजिस्ट्रेशंस। तो डिपार्टमेंट ने जब कैंसिल करे, किस ग्राउंड पे करें, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्शन 29 सब क्लॉज 2। तो अगर कैंसिलेशन 29(2) के बेसिस पे होगा या टैक्सेबल पर्सन ने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, इन बोथ दी सिनेरियोज व्हाट वुड हैपन, देयर वुड बी अ नोटिस व्हिच वुड बी जनरेटेड अंडर ASMT 14 एंड बेस्ड ऑन दैट योर असेसमेंट वुड बी डन। ये असेसमेंट कैसे होगी, अगेन क्योंकि इंफॉर्मेशन तो है नहीं, तो अगेन इट वुड बी अ बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट किस बेसिस पे होगी, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन which they have collected, based on the information evidence which they have in respect of that person। तो इसीलिए यहां वर्ड क्या यूज किया, टैक्सेबल पर्सन। अगेन दिस सेक्शन इज ऑल्सो बीइंग रिटन, जब ये स्टार्ट हो रहा है तो कैसे स्टार्ट हो रहा है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्ररी। तो 73, 74 और 74A जो न्यू सेक्शन अब इंप्लीमेंट हो जाएगा, उसको ध्यान में रखते हुए भी इन दो सिनेरियो 73, 74, 74A will not be applied. What it would be? It would be applied in a section 63. एक जो सबसे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो पॉइंट है वो क्या है, दैट इज
before doing any positions, before passing any order, the opportunity of being heard would always be provided to the taxable person. उससे पूछा जाएगा कि भाई आपके साथ ये असेसमेंट क्यों नहीं पास करते। अगर वो रिप्लाई नहीं करेगा तो इट वुड बी अ बेस्ट जजमेंट, अगर वो रिप्लाई कर देगा तो बेस्ड ऑन दैट फैक्ट्स द ऑर्डर वुड बी पास्ड। नाउ जब हम डिस्कशन कर रहे थे कि कैंसिलेशन अंडर सेक्शन 29 सब क्लॉज 2, ये एक बड़ा स्पेसिफिक सेक्शन है और बहुत वाइडर है। जो पहला वाला पार्ट है, रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन हु हैज कॉन्ट्रोवेंट द प्रोविजन, मतलब कुछ भी प्रोविजन अगर उसने कॉन्ट्रोवेंट कर दिया, सो दे हैव द पोजीशंस टू कैंसिल योर रजिस्ट्रेशन। देन कंपोजिशन डीलर ने अगर रिटर्न नहीं भरी, क्योंकि साल में अगर एक रिटर्न नहीं भरी, 3 महीने तक अगर उसने रिटर्न नहीं भरी बियॉन्ड द डेट ऑन विच ही वाज सपोज टू फाइल, तो इन दैट केस ऑल्सो the officer may invoke 29 sub clause 2 and cancel the registration. 6 महीने कॉन्टिन्यूसली किसी मंथली फाइलर ने रिटर्न नहीं भरी या 2 क्वार्टर क्यूआरपीएम वाले ने रिटर्न भरी, तो इन दैट केस ऑल्सो योर रजिस्ट्रेशन वुड बी कैंसल। देन व्हाट इज द अनदर सिनेरियो कि आपने रजिस्ट्रेशन तो ले लिया और 6 महीने तक बिजनेस ही नहीं करा। तो अगर आपने 6 महीने तक बिजनेस नहीं करा, देन इन दैट केस ऑल्सो द रजिस्ट्रेशन वुड बी कैंसल। अब लास्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वो क्या है, रजिस्ट्रेशन तो ले लिया बट कैसे लिया, बेस्ड ऑन दी फ्रॉडलेंट डॉक्यूमेंट, विलफुल मिसस्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ। अगर इन सिनेरियोज, इन सुपर कंडीशन के बेसिस पे अगर आपने रजिस्ट्रेशन लिया है, तो देन इन दोज केसेस योर रजिस्ट्रेशन मे बी कैंसिल। और अगर वो कैंसिल होगा तो उसकी असेसमेंट कैसे होगी, बेस्ड ऑन दी सेक्शन 63। Now, the last leg, which is the most important in order to understand, ये practically तो वैसे कम यूज होती है, but जब कभी रेट्स या वैसी सिनेरियोज आ जाते हैं तो दिस सेक्शन में भी इन्वॉल्व। तो ये क्या कह रहा है कि सेक्शन 64 के अंदर, इसमें चीज आपको क्या ध्यान रखनी है कि ये किस व्यक्ति की बात कर रहा है, टू whom this provision is applicable. It is saying that the person may be registered, may be unregistered. रजिस्टर्ड पर्सन भी हो सकता है, अनरजिस्टर्ड पर्सन भी हो सकता है। कब करेगा, द प्रॉपर ऑफिसर, जब उसके पास कोई एविडेंस है। एविडेंस होने के बाद नाउ व्हाट ही इज सपोज टू डू, ही इज सपोज टू टेक अ प्रायर प्रीवियस परमिशन फ्रॉम एडिशनल कमिश्नर और ज्वाइंट। ऐसा नहीं है कि मन में आया और उसने कर दिया, तो सबसे पहले उसको परमिशन लेनी पड़ेगी। किससे ले सकता है, एडिशनल कमिश्नर से या ज्वाइंट कमिश्नर। क्या करने के लिए, क्या उसको लगा, व्हाट शुड बी द मेन रीजन। उसको ऐसा लगता है ऑफिसर को दैट अगर ये असेसमेंट जल्दी नहीं हुई तो देयर वुड बी लॉस विच मे बी कॉस्ट टू दी रेवेन्यू, बट he has to convince the additional and joint commissioner that there is a strong reason that in order to protect the interest of the revenue, he is supposed to, or he is putting up an application, or he is putting up a request that we are supposed to do the summary assessment. अगर उसके पास क्या होना इंपॉर्टेंट है, दैट इज द सफिशिएंट ग्राउंड्स टू बिलीव। किस चीज के लिए बिलीव, उसे इंस्टेंट क्यों चाहिए। अगर हमने रिएक्ट नहीं करा, अगर हमने एक्ट नहीं करा, तो देन देयर कुड बी अ लॉस टू दी रेवेन्यू। तो 64 में हमने ये समझा कि पहला सिनेरियो जब उसको लगेगा। दूसरा सिनेरियो विच इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट वन, और जो प्रैक्टिकली यूज भी होता है, उस केस में क्या है कि टैक्सेबल पर्सन के बारे में तो नहीं पता, बट ये जो प्रोवाइजो है ये किसके लिए लग रहा है, ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ द गुड्स। किसके कंटेक्स्ट में, ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ द गुड्स। इस सिनेरियो में क्या हो रहा है कि दैट somebody is carrying the goods, suppose मैं हूं, मेरे पास ये गुड्स हैं एंड आई एम कैरिंग, बट आई एम नॉट द टैक्सेबल पर्सन हु इज द ओनर ऑफ दिस। तो उस केस में समरी असेसमेंट कैसे होगी, तो ये क्या कहते हैं, कहते हैं जी वेयर द टैक्सेबल पर्सन टू हुम लायबिलिटी पर्टेन। क्योंकि आज मोबाइल या गुड्स मेरे हाथ में है, तो वो ये मानते हैं कि आप ही इसके टैक्सेबल पर्सन। तो किसके कंटेक्स्ट में रिस्ट्रिक्ट कर दिया, ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ दी गुड्स, क्योंकि सर्विसेज के केस में तो नहीं होगा ये सिनेरियो। तो इन्होंने क्या कहा, जिस व्यक्ति के पास गुड्स हैं हम उसी को डीमिंग फिक्शन दे देंगे कि ये व्यक्ति ही
लाइबल है किस चीज के लिए, टैक्स देने के लिए, और बेस्ड ऑन दैट the officer would be doing the assessment which would be termed as summary assessment. तो उसी के बेसिस पे the proper officer based on the information that he sees कि ये कहीं ना कहीं unaccounted goods हैं या these goods has not been moved with the proper documentation or these goods are illegal goods, in all those scenarios what he will do, he will issue the notices and based on that he will be making the assessment. अच्छा, अगेन एक चीज हमें ध्यान के रखनी है, जब भी कोई ऑफिसर करेगा तो अगेन यू हैव द राइट टू से वॉट एवर यू वॉन्ट टू से. द टैक्सेबल पर्सन विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑर्डर. अब क्या हो सकता है कि वही विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन भी हो सकती है. कब हो सकती है कि जब टैक्सेबल पर्सन कितने टाइम के अंदर, 30 दिन के अंदर, अगर वो जब ऑर्डर आ गया है उस ऑर्डर के बेस पे इफ ही वांट्स टू विड्रॉ ही कैन डू सो, और ऑन हिज ओन मोशन खुद भी कर सकता है. If the additional commissioner or joint commissioner consider such order is erroneous. तो ये किसकी रिक्वेस्ट गई है? टैक्सेबल पर्सन की. किसके लिए गई है? कि भाई आप इसे विड्रॉ कर. तो वो टैक्सेबल पर्सन के उसमें भी जा सकता है. सेकेंडली ऑफिसर खुद भी जा सकता है. इफ द एडिशनल कमिश्नर और ज्वाइंट कमिश्नर कंसिडर सच ऑर्डर इज एरोनियस, अगर उनको लगता है कि ये ऑर्डर एरोनियस, तो वो क्या कर लेगा? वो अपना ऑर्डर विड्रॉ कर लेगा. और विड्रॉ किसमें करेगा? ASMT 18. So with this, the part of the assessment which has been specified or which has been detailed in the GST is complete. In case anyone has any practical challenges in respect of this, I would be happy to answer that. If anyone has any questions, please do ask from sir. मोहित सर, मेरी एक क्वेरी है बेसिकली, हाँ, कि आपने जो एडिशनल फीस बताई थी, एडिशनल लेट फीस जो बताई थी 100 रुपए पर डे, उस पर कोई कैपिंग है? नहीं सर, उस पर कोई कैपिंग नहीं है? नहीं, ये तो बेसिकली जैसे अपनी TDS की रिटर्न्स हो गई ना. हाँ. अब इन्होंने एक चीज ये क्यों लाए, प्रोविजो स्पेसिफिकली लेके आए उन सिनेरियोज में जहां पर ये 60 days या टाइम लिमिट जा चुका था. ओके. बट डिस्पाइट दैट देयर वाज अ चैलेंज. तो उन्होंने इन ऑर्डर टू अवॉइड द लिटिगेशंस, तो उन्होंने ये बोला कि भाई ठीक है, अगर बाद में भी हो गया तो आप 100 रुपए लेट भी दे दो और जो इंटरेस्ट है वो तो दे ही देना, उसके बेसिस पे वी विल बी कंसिडरिंग और हम आपका रजिस्ट्रेशन रिस्टोर करते हैं. ये 100 रुपए तो पर डे है ना, बट इस पे कोई टैक्स अमाउंट का या कुछ भी कैपिंग नहीं नहीं है? नहीं, ये तो लेट फी है ना भाई. हाँ. ये तो लेट फी है. टैक्स और इंटरेस्ट तो वो लेंगे ही लेंगे जो लेंगे. ओके. और जो मेजर हमने जो चेक करा ना अभी, जैसे असेसमेंट्स के दौरान में सबसे ज्यादा प्रिविलेंट जो असेसमेंट है वो है सेक्शन 61 की, ओके. जो ASMT 10 हम जिसे कह देते हैं एकदम, अगर कॉमन लैंग्वेज में जब हम डिस्कशन करें. इसमें आप लोग ध्यान क्या रखें, जब भी आप ASMT 10 का रिप्लाई करें तो ये आप फोर्स ही कर लें कि दिस इज अ रिप्लाई. अगर वो फेवरेबल आ गया तो अच्छी बात है. इन केस अगर वो फेवरेबल नहीं आता है तो मेक श्योर फैक्चुअली जो इंफॉर्मेशन उनको चाहिए इन रिस्पेक्ट ऑफ द रिकंसिलेशन वो आप पहले प्रोवाइड करें. रीजन, अगर आप नहीं प्रोवाइड करते हैं और लेटर ऑन आप प्रोवाइड करते हो तो देयर कुड बी अ प्रोबेबिलिटी एंड द पॉसिबिलिटी कि ऑफिसर जो है वो आपकी बात ना माने. क्योंकि ऑफिसर ये कहेगा जब मैंने आपसे पूछा था तब आपको बता देना चाहिए था. तो अगर ऑफिसर के पास इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी तो देन देयर वुड बी अ चैलेंज. यू सर, थैंक यू फॉर रिस्पॉन्डिंग माय क्वेरी. और किसी की कोई प्रैक्टिकल क्वेरी हो तो आई वुड बी हैप्पी टू आंसर दैट. Now, I would like to invite our second moderator, Mrs. Mansi Badlani. Hello, good evening, everybody. I am Mansi Badlani, a recent qualified chartered accountant, having a great enthusiasm in learning and building new skills. We are having a session on intricacies involved in GST assessment and income tax reassessment. I would like to thank everybody for joining this session and staying with us for smooth conduct of this session.
We are now moving forward for our next session topic on income tax reassessment, which will be delivered by CA Bhimanshu Kansal. Just Uh, give- Bhimanshu, Mansi ji, may I interrupt you for a second only? yeah, sure, sir. Thank you, Mohit sir. Thank you for इंटरेक्टिव सेशन। थोड़ी सी कुछ मजबूरियां हैं जिस वजह से हम आपको जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन जो है वो आपको फिजिकली अभी नहीं दे पाएंगे क्योंकि वेबिनार बेस है। बट स्टिल आई वांट टू शो योर सर्टिफिकेट, ये आपको हम लोग जल्दी डिस्पैच करेंगे आपके एड्रेस पर। थैंक यू। आपने बहुत ही मतलब मैं बोलूँ कि एक छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती है, छोटी छोटी क्वेरीज होती है, वो रिजॉल्व एक तरह से करने की कोशिश करी है। और थैंक यू फॉर योर सेशन सर। थैंक यू। Thank you so much, मानसी जी sir. प्लीज Thanks कंटिन्यू। for your time. थैंक यू फॉर योर टाइम सर। मानसी जी प्लीज कंटिन्यू। Okay, now we are moving forward for our next session topic on income tax reassessment, which will be delivered by CA Bhimanshu Kansal. Bhimanshu is a chartered accountant and advocate with over 10 years of experience over more than 350 matters related to income tax and international taxation before legal authorities. He has also contributed well to the ICI by making deliberations on income tax assessment and appeal and by writing articles on various income tax matters in ICI Journal. He has also authored book on minimum alternate tax with Taxman publication and has also been awarded with FIT Fellow 2023 award in Mumbai for his research paper on international taxation. I will be delivering floor to CA Himanshu for his powerful insights on income tax reassessment. Over to you, Himanshu. Thank you, Mansi, for introduction. Hope I am audible. Yeah, you are. Okay, thank you. Goddess Saraswati, Abhishek ji, Uttam ji, other team members of FIEA, thank you so much for providing me this opportunity. And today's topic is to handle the reassessment proceeding. So I just share my screen also. I have prepared a PPT for some reference purpose. Otherwise, I'll explain the things orally also. Request if someone can confirm if my screen is visible. ऑडिबल सर, स्क्रीन इज विजिबल। Okay, thank you. So if we categorize the reassessment proceeding, so nowadays there are three category of reassessment proceeding which are pending before us. So first is the era which is prior to April 2021. Thereafter, from 1st April 21, the law has been amended, and there is a certain other procedure which need to be followed by SSC officer. So that was from 1st April 21 to 31st August 24. Thereafter, White Finance number 2 Act 2024, the procedure is again amended, and new procedure was effective from 1st September 2024. So this is the reason I have categorized the reassessment proceeding in three category here. So if we analyze the cases of reassessment proceedings, so we will see that the cases which is prior to April 2021, these cases are also pending before Commission of Income Tax Appeals or ITAT. So considering that, we need to analyze that how we need to handle those proceedings. What are the key areas which we need to consider while drafting any response or while drafting or while handling the reassessment proceeding. So as a background, I just wanted to tell you that prior to April 2021, the reassessment procedure has been changed with effect from 1st April 1989, wherein the word reason to believe has been added. So assessing officer must have the reason to believe while initiating any reassessment proceeding. So scope is widened by that amendment that was effective from 1st April 1989. And uh,
there should be some material, and that material should be live material with the assessing officer while initiating the reassessment proceeding. So, as I mentioned, that all the scope was widened, but the power with assessing officer was not plenary. There सर ऑडियो और वीडियो आपका there should इंटरप्ट be हो गया है। the reason which are available with the assessing officer should be real, but not based on assumption. So, considering that there's landmark judgment also, GVK dive shout, I'll mention in my subsequent slide. But yes, merely on assumption of premises or fancier beams, there cannot be reassessment proceeding. So the procedure has been delineated and guidance has been provided by Supreme Court judgment also. So that we need to keep in mind while handling the reassessment proceeding, especially when the cases are prior to 1st April 2021. So as I mentioned that the powers are widened with the assessing officer, but still if we read the meaning of reason to believe, so somewhere the court has interpreted the reason to believe, and they have mentioned that these reasons should be real, that should not be based on assumption. And the reason of belief is wider term than the satisfaction. Generally, we see in the language of law that if assessing officer is satisfied, so that is narrower, but reason to believe is a wider term. So nowadays, the assessing officer is having certain information which suggests that income escapement. So now the words are suggestion itself. So that is still narrower, but reason to believe is very widened term. So considering that, we need to keep in mind कि क्या reason थे officer के पास, क्या वो actual reason थे नहीं थे. Apart from that, there are certain other things also which we need to keep in mind, that officer should not open the reassessment proceeding blindly. That should not be the case, that officer has opened the reassessment proceeding and concluded the proceeding on another aspect. So I'm moving to my next slide. So which says, and this is the summary of reassessment proceeding prior to 1st April 2021, wherein it was mentioned that assessing officer, if he has reason to believe, which I have highlighted, that any income chargeable to tax has escaped assessment, and for any assessment year, then the assessing officer is empowered subject to provision of section 148 to 153, which talks about that issuance of notice, timeline to issue the notice, approval from the specified authority. So these are the other sections which also need to be followed in the reassessment proceeding. So what is the power of assessing officer? To assess or reassess such income, and also any other chargeable to tax. So I'll come to this point at later stage. So other income also come under the ambit to reassess or assess by the assessing officer, which has escaped assessment and which come to his notice subsequently in the course of proceeding under section 147, or to recompute the loss, depreciation allowance, or any other allowance as the case may be for the relevant assessment year. So as I mentioned, reason to believe that that should be certain reason, that should be live reason, that should not be basis on mentioning that this should be real, that should be honest, that should exist also with certain relevant materials. So I'll give you example also, but yes, there should be reason to believe. Thereafter, an income chargeable to tax. So whatever income the assessing officer is alleging, that should be chargeable to tax. So I would like to take one example. Let's suppose that officer has identified that there is a sale of agricultural land and that has not been offered to tax. So since the agriculture income is not chargeable to tax, we can say that there is no income which is chargeable to tax has escaped assessment. So considering that, we may say that the assessment is invalid. Applying the other ratio of judicial pronouncement also. The second term is escaped assessment. So this is also an important terminology to understand while handling the reassessment proceeding. Escaped assessment means that something which has been unnoticed
by the assessing officer while handling the original assessment proceeding. So, for example, that officer while handling the original assessment proceeding, he has missed to let's suppose charge to tax certain capital gain also. Later stage, he came to know that yes, there is some certain capital gain also in the case of assessee, and that has been unnoticed or that has been missed to be taken care in the original proceeding. So that can be a basis to open the reassessment proceeding. So this is the case of escaped assessment. And now the other line which is underlined also, any other income chargeable to tax. So let's suppose that officer has initiated the reassessment proceeding on point whether he is limited to reassess the things limited to that X point only, or the power can be extended to Y point also. So law permits the assessing officer that you can assess the things because if we see the recent judgments from Supreme Court in the case of Ashish Agrawal and Rajiv Bansal also, so that mentioned that this is a fresh assessment and the officer has wide power, and this is coming from the law also कि अगर कोई X income officer ने allege किया है from the beginning and thereafter he identified that yes, Y income is also there which is escaped assessment and that should also be taxed, then he is empowered to tax that other income also. But there are certain limitation also in this case. Uh, the assessment should be concluded on X point also. ऐसा नहीं है कि असेसिंग ऑफिसर ने कोई एक पॉइंट उठाया उस पर रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग करा बट जो ओरिजिनल पॉइंट था उसमें कोई एस्केपमेंट नहीं था. तो कंसीडरिंग दैट ऑफिसर को ऐसा नहीं पावर दिया है कि आप किसी भी पॉइंट से आप स्टार्ट कर लो and then you can enter into the proceeding of the assessee and conclude on any other point. That is not the power with the assessing officer. Officer should conclude the proceeding with adverse inference, I must say, on X point also. Then he can move to next Y point. अगर X point ही अगर उसमें missing है, then he cannot extend his power to Y point. Hope I am clear here. But yes, this is an important point which need to be noted here. And I have noted down certain example also to make it clear also. So as I mentioned that initiation on non-existence ground cannot be upheld. So for example, the officer has initiated the proceeding that firm his the partnership firm is dissolved and there should be certain tax implication on that account. But this is not the case of that firm is dissolved, but there is a constitution change in the firm. So the basis on which the assessing officer has picked up or initiated the reassessment proceeding is invalid. So considering that the reassessment proceeding could not be held as valid. Example, just wanted to highlight here that let's suppose that officer has alleged that assessee has not furnished his return of income and certain income has not been offered to tax. But the actual material says that assessee has filed his return of income, first thing. Second thing is that the department is not sure that the income which the assessing officer is alleging pertaining to which assessment year. So there is a gap in the reason to believe given by the assessing officer and the actual facts. This is the material available in the records. Officer is saying that you have not filed your income tax return and there is certain income which is escaped assessment, but the true fact is that assessee has filed his income tax return. So since the base ground does not exist here, so considering that the reassessment proceeding cannot be held as valid reassessment proceeding. And so this is the background of initiation of reassessment proceeding. Now we further analyze the cases prior to 1st April 2021.
So there is certain lack in issuance of 148 notice also, because that is the statutory notice to be served but not issued. So after Finance Number 2 Act 2024, the word has been amended as issued कि 148 का जो notice है वो issue होना चाहिए. But prior to that, चाहे वो 1/4/21 से पहले था, और if we analyze the reassessment proceeding, so every year in every finance act there is a tinkering in the reassessment proceeding. So everywhere the word is served is mentioned while the notice 148 come into the picture, but Finance Act 24 से उन्होंने mention किया that should be issued. सर्व का कोई उसमें mention नहीं है, तो that will come at later stage जब मैं 1 September 2024 के बाद के cases discuss करूंगा. But still, the service of notice under 148 is a prime element which we also need to analyze. So first is we need to see whether 148 notice is served within the time period or not. That is the first check, which we should check while handling the any appeal proceeding in prior cases, क्योंकि उसमें कुछ assessment तो pending नहीं है. So cases which are pending either before CITA or before ITAT. Uh, I just give you an example. Let's suppose that assessing officer has issued a notice on 31st March, but that has been served to assessee post 31st March. So we can say that since this not been served within the time period, so proceeding should be quashed in this case. Second case is that there is amalgamation of one company, and the notice has been issued to the amalgamated company, which is not existing entity. So notice should be invalid, and accordingly the entire reassessment proceeding should be quashed in this case. सर नेटवर्क इशू आ रहा है आई थिंक आपके एंड पे ना थोड़ा सा ऑडियो बीच में ना इंटरप्ट हो जाती है. ओके, सो वॉइस में कुछ ब्रेक हो रहा है? नहीं अभी ठीक है, मतलब बीच बीच में ब्रेक हो रही है. अच्छा, ओके, ठीक है. जी थैंक आई थिंक जितना मैंने बोला वो क्लियर होगा अभी तक, ऐसा यू. जी 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 कुछ सर, बिल्कुल मिस? बिल्कुल बिल्कुल. ठीक है, ओके. नेक्स्ट केस इज दैट देयर कैन बी केस ऑफ डिसीज्ड पर्सन आल्सो, जिसमें लीगल हायर अपॉइंट होता है. सो लेट्स सपोज दैट नोटिस हैज बीन इशूड ऑन द डिसीज्ड पर्सन. नाउ that notice need to be issued validly on the successor, and that notice is issued to successor after the time period. In that case also we can say that the notice has been served after limitation. Another points which we should keep in mind while handling the reassessment proceeding: pendency of income tax return should bar the reassessment proceeding. Meaning thereby, let's suppose I have filed my income tax return and that has been picked up for reassessment proceeding, but the processing of my income tax return is pending. So since the processing of income tax return is pending, so how assessing officer can allege that I do have escaped income? So until unless the return will be processed in a valid manner, so initiating the reassessment proceeding should not be valid in case. So there can be cases that likewise we get the defective notice also while filing income tax return, or there is a delay also in processing of my income tax return. So till the time my return is valid and that is processed properly, initiation of reassessment proceeding should not be valid in that scenario. Let's suppose another example which I'm telling you, that there is a pending assessment proceeding and assessing officer has issued the notice for reassessment proceeding. So that notice to initiate the reassessment proceeding is also invalid, because original assessment proceeding मेरी pending है, which is before the assessing officer, and assessing officer is having wide enough power to analyze my entire computation, entire losses, entire depreciation,
entire allowances which are covered in reassessment proceeding. So in this scenario, reassessment proceeding will be held as invalid. Now another scenario is, and which has happened in at the end of 31st August 2024 also, because अभी प्रोसीजर चेंज हो रहा था क्योंकि फाइनेंस एक्ट 24 के बाद आने के बाद 1 सितंबर से प्रोसीजर चेंज हो रहा था. तो इन हेज what officer has done, they have issued the notices by 31st August 2024 without applying mind or without analyzing कि किस केस में reassessment already pending है. Blindly they have issued the notices under 148 by 31st August 2024. So when my original reassessment proceeding is pending before the assessing officer, the issuance of another notice of reassessment proceeding will not be held as valid reassessment proceeding. So this is a live case also with me also, and you may also check in your facts, because if this is the case और 31st अगस्त 2024 का जो डेडलाइन है, लिमिटेशन पीरियड है रीअसेसमेंट कंक्लूड होने का, दैट इज 31st मार्च 2026, क्योंकि रीअसेसमेंट कंक्लूड कब होता है, जिस ईयर में 148 इशू हुआ है उसके एंड से विद इन 12 months. So since these notices have been issued in 31st August 2024, so end of the financial is 31st March 2025, and वहां से 12 months we count, then it comes to 31st March 2026. So these proceeding are still pending. Hopefully अभी हम देखेंगे तो जून में उनके 143(2) के नोटिस आ जाएंगे, thereafter 142(1) के नोटिस आने शुरू हो जाएंगे. So since the proceeding is pending, so that can be a fit case to file writ petition before the High Court कि हमारी reassessment proceeding already pending है, so considering that another reassessment proceeding should be held as invalid and should be quashed. So so these are the cases and the main points which I've highlighted here. And as I mentioned initially, that the reason to believe is available with the assessing officer should have the live link also. So live link का मतलब क्या होता है, I'll also explain with certain example. But yes, again I'll say कि कुछ भी the reason to believe should not be in air. That should be honest. That should be real. So another example which I'm giving to you. Let's suppose there is assessment or reassessment proceeding in case of daughter of assessee, and in any proceeding the daughter mentioned that by way of affidavit that assessee has understated certain expenditure during marriage. So now with that affidavit, assessing officer is having live link, sufficient material with him that the assessee, not the daughter, but the assessee has understated the income, then officer can reopen the proceeding or reassessment proceeding in case of assessee in this case. So this can be a case जहाँ पर sufficient material है and officer के पास reason to believe भी है, तो इस case में proceeding open हो सकता है. Second is that as we see also that let's suppose the assessee has shown that he has sold certain land or building at X amount, but at later stage officer came to know that the stamp duty value of that property is X plus 1. So ideally the sale consideration in this case should be considered as X plus 1. So there is a escapement of income, and these are the material available with the assessing officer. So this can be a fit case to open the reassessment proceeding. But there are certain cases where the assessing officer has concluded the assessment proceeding. At later stage, the assessing officer came to know कि मेरे से ये मिस हो गया था. Let's suppose ऐसा जनरली हम देखते हैं जब मैट की कंपटीशन वगैरह असेसिंग ऑफिसर करते हैं तो उसमें कोई एडजस्टमेंट छोड़ देते हैं या फिर उसका टैक्सेशन ठीक से नहीं करते, तो उस केस में वी से दैट दिस इज द चेंज ऑफ ओपिनियन ऑफ असेसिंग ऑफिसर and this is the fresh application of mind by the assessing officer. So fresh application of
by the assessing officer or change of opinion by the assessing officer cannot be a ground to open the reassessment proceeding. So, in nutshell, I would say if the assessee has submitted during the course of assessment proceeding and later stage the assessing officer came that no, this is missed, then we can take the shelter that assessee has disclosed entire facts, entire material during the course of assessment proceeding. So considering that, the reassessment proceeding cannot be opened in this case. There are plethora of judgment which says that if true facts, fully material have been disclosed by the assessee, then there is no further scope with the assessing officer to reopen the assessment proceeding. So I would like to conclude this the cases prior to 1st April 2021 that the power of the assessing officer are wide enough, but still there are certain jurisdictional issues in the reassessment proceeding. Should come within the purview of law that need to be analyzed properly. And first, we need to see that what are the facts in our case. Otherwise, we should see that what are the legal grounds in our case, like valid service of notice under 148, limitation period, approval by the specified authority. So there are multiple factors which we need to take care while handling the reassessment proceeding in old cases. Now, I'm moving to the cases which is from 1st April 2021. So I believe that everyone is aware that from 1st April 2021, there is drastic change in the reassessment procedure. For your just to mention here that just to summarize what is before 1st April 2021. So these are the settled legal position in relation to initiation of reassessment proceeding. That I'm again repeating these things that there must be material for relief, circumstances must exist and cannot be deemed to exist for arriving at opinion. Reasons to believe must be honest and not based on suspicious gossips, rumors, or conjecture. Reasons referred to must disclose the process of reasoning by which he holds reason to believe, and change of opinion does not confer the jurisdiction. There must be nexus between material and belief. The reasons referred to must show the application of mind by the assessing officer. So this is the summary of what I have mentioned for the cases prior to 1st April 2021. Because if this is the case of reassessment proceedings, so everyone is alert to handle the reassessment proceeding. Not only the department, because department भी जब reassessment proceeding करता है तो उनके पास भी किसी सर्च सीजर से या कहीं से भी कुछ भी मटेरियल या कुछ फैक्ट्स हैं, so they also don't want to miss to text the assessee. Similarly, if I am talking about the assessee also, अगर उसका reassessment proceeding है और काफी साल पुराना है तो ऑफ कोर्स टैक्स इम्प्लीकेशंस के साथ साथ जो इंटरेस्ट एंड पेनल्टी के इम्प्लीकेशंस हैं दैट इज ह्यूज. In fear to levy the huge taxation. Apart from department and assessee also, the consultant, tax professional is also somewhere very mindful to handle the reassessment proceeding, because this is something which may lead to levy of huge taxation along with interest and penalty on the assessee. So in a nutshell, we should see the jurisdictional issues also while handling the reassessment proceeding. And as I was mentioning that the Supreme Court judgment which has followed and which has laid down the principle guidance while handling the reassessment proceeding. So this is in the case of JK and draft shaft. So in this case, the Supreme Court has laid down the following guidance and following the binding precedent while issuing the notices. So first, when the notice under 148 is received,
then the proper course for the assessee is to file income tax return. After that, if assessee desires, then assessee can ask the reason for issue such notice, which I am mentioning reason to believe. Officer is under an obligation to supply such reason within the reasonable time, and upon receipt of reasons, the assessee can file the objection against such reasons. And if assessee has filed such encounters, then assessing officer is bound to dispose of the same by passing the speaking order. So this is the guiding principle which is given by GK and Driveshout. And if we analyze the current law, so somewhere this procedure has been laid down under 148A procedure. So now coming to 148A procedure, which is effective from 1st April 2021. So as I mentioned that the procedure was amended and 148A procedure was laid down in the law with effect from 1st April 2021. So that was the period which comes into ambit of TOLA also, wherein due to COVID, there are certain extension of timelines. So 20 March 2020 से लेके and 30th June 2021 तक जितनी भी timelines थी that has been extended. So now what happened that following the procedure, the assessing officer has issued certain notices in between of 1st April 21 to 30 June 21 under an impression that since under ambit of TOLA मेरा जितना भी टाइम पीरियड चाहे इशू करने का नोटिस है चाहे ऑर्डर पास करने का है चाहे एनी प्रोसीडिंग बिकॉज TOLA says any, so कोई भी चीज है that has been extended till 30th June 2021. So what they have done, instead of issuance of notice under 148A, which is the ideal process to initiate the reassessment proceeding, they have issued notice under section 148 simply. Now, when law was amended and that has been passed and effective from 1st April 2021, so the question before the high courts, I'm saying high court क्योंकि इस केस में writ petitions डली थी. The question before high court was that okay, the time limit to issue the notice, to conclude the proceeding, to pass the order has been extended, that is understood. But the law which is effective and passed by parliament and that is effective from 1st April 2021, that cannot be extended to 30th June 2021 क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन उस लॉ को एक्सटेंड करने की पावर नहीं देती जो ऑलरेडी पार्लियामेंट से पास हुई है. So the High Court has quashed the notices which have been issued in between 1st April 2021 to 30th June 2021, mentioning that since the assessing officer has not followed the amended procedure to initiate the reassessment proceeding, so considering that entire proceeding need to be quashed. Now, matter reached to Supreme Court, the case which we know popularly as the Ashish Agrawal case. Matter has reached before Supreme Court, and Supreme Court has mentioned that okay, the assessing officers has issued notice under 148 under bona fide belief that law has also been extended till 30th June 2021. So considering that the notice issued under 148 should be valid notice, and we consider these notices as notice issued under section 148A. So these are held as valid notice issued in between of 1st April 21 to 30th June 2021. So this is the crux of that judgment. Now, in view of that Ashish Agrawal judgment, there are certain instructions from the severity in pursuant to which the assessing officer has to supply the material which is available in their record to get the reply from the assessee. So given that assessing officer has supplied the material against which the assessee need to respond.
Now, what was the lack which have been noticed in Ashish Agrawal case, that okay, you have considered and you have given the judgment on the issuance of notice in between of these 3 months, but what about the time limit to issue notice under section 148? Because 148 is merely a procedure. After completion of that 148A procedure, the assessing officer need to issue 148 notice also. So 148A, okay, we understood, but 148 का जो timeline है in pursuant to 149 section, so that has been lapsed क्योंकि उसका कहीं उसमें कोई जिक्र नहीं था. Second thing is that while issuing these notices under 148A, there should be certain approval from the specified authorities also. So there is no extension in pursuant to TOLA in extending the period to take the approval from the specified authority. So considering that these notices should be quest. So this is the second round of controversy before the Supreme Court. And there is another Supreme Court judgment which we popularly known as Rajiv Bansal. So Rajiv Bansal wale case mein these issues also been considered by Supreme Court, and crux of the judgment was that they have categorized on year to year basis कि किस किस assessment year में क्या कुछ होना है, and कौन सी प्रोसीडिंग वैलिड है, कौन सी प्रोसीडिंग वैलिड नहीं है. सो फॉर असेसमेंट ईयर 16-17 and 17-18, it was held that if the approval was taken from PCIT instead of PCCIT, then the cases which are open for assessment year 16-17 and 17-18, which these are liable to be held as invalid and liable to be quashed. The second assessment year is 2015-16. So since 15-16 does not come under the ambit of TOLA, so considering that the issuance of notices in between 1st April 21 to 30 June 2021 are liable to be quashed apparently. Next year is, मैं नीचे वाले असेसमेंट ईयर से लेके चल रहा हूँ 16-17, 17-18. अगर अप्रूवल ठीक से नहीं है then these are invalid, otherwise these are valid. 15-16, since this does not come under the ambit of TOLA, so these are invalid apparently. Now next year is assessment year 13-14 and 14-15. So since these years come under the ambit of TOLA, so जितने भी notices 30 June 2021 तक issue हुए हैं, these are valid notices. But there is a catch in the proceeding of assessment year 13-14 and 14-15. So since TOLA में कवर्ड हैं नोटिस इशू हैं 1st April 21 से लेके 30 June 2021 तक. सो व्हाट सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड एट कि जितना भी टाइम पीरियड है जब नोटिस इशू हुआ है, तो मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ जो सुप्रीम कोर्ट ने भी पैरा 112 में दिया अपने जजमेंट में. सो लेट सपोज 1 मई 2021 को नोटिस इशू हुआ 148 का, जो कि डीम मान लिया गया 148A का नोटिस. सो 1 मई 2021 से लेके 30 जून 2021 का पीरियड विच कम्स 61 days, सो डेट नीड टू बी एक्सक्लूडेड एंड नीड टू बी एडेड जब आशीष अग्रवाल के परसुएंट फ्रेश नोटिस आए और असेसी ने उसका रिप्लाई किया. तो फॉर एग्जांपल जो अगेन पैरा 112 में जो सुप्रीम कोर्ट ने एग्जांपल दिया कि 2 जून 22 को असेसिंग ऑफिसर ने मटेरियल सप्लाई किया, उसके परसुएंट असेसी ने 18 जून 22 को उसका रिप्लाई किया. सो जो 61 डेज का जो पीरियड था, डेट नीड टू बी एडेड फ्रॉम 18 जून 22 एंड डेट comes to end at 18 August 22. So that is the limitation period to issue 148 notice. तो इस सिनेरियो में अगर 148 का नोटिस 18 अगस्त 22 तक नहीं सर्व हुआ है, then proceeding is time barred and liable to be quashed. So considering this thing, we need to be mindful कि हमारे कौन कौन से असेसमेंट ईयर के मैटर्स पेंडिंग हैं, वो आशीष अग्रवाल और राजीव बंसल केस से कैसे कवर होते हैं और उनमें क्या पॉसिबिलिटी है
वैलिड और इनवैलिड होने की. So that is a mindful exercise while handling the reassessment process. Now coming to other grounds, which is in pursuant to 148A procedure. So as we can read over screen also, hopefully my screen is visible to everyone. Can someone confirm this? Yes, Yes, visible. yes, visible. Okay, thank you. So if we read the procedure under 148A, so that starts the assessing officer shall before issuing any notice under 148, the clause A is conduct any inquiry if required with the prior approval of a specified authority. So their judgment on this clause A also, wherein although the section starts from shall, but conduct an inquiry, and this is uh, annexed with if required. So inquiry is at the discretion of assessing officer. अगर उसको लगता है required है, then he can conduct the inquiry. If assessing officer thinks that no inquiry is not required, then this is not mandatory exercise. But coming to clause B, which says, and we start again from the main heading, the assessing officer shall, before issuing any notice under section 148, provide an opportunity of being heard to the assessee by serving upon him a notice to show cause within such time as may be specified in the notice, and not words being not less than 7 days. So if you see the notice under 148A, which is giving you an opportunity to respond in lesser than 7 days, then that procedure may be held as invalid procedure followed under 148A. So I just give you certain example here. Let's suppose the notice under 148A has been issued on 20, uh, 20 March 22, and officer has asked you to respond on 27th March 22. So it seems that assessing officer has given you the clear 7 days time. So this is a valid notice as per 148AB procedure. But if we see at the bottom, uh, right bottom of the notice, we observe that notice date is 20 March 22, but that has been signed on 21st March 22. So when notice has been signed on 21st March, so how it can be issued on 20 March? So considering that the 27 March, the time which is given to me is less than 7 days time. So considering that, we can say that procedure has not been properly followed. Second example is that notice has been issued on 20 March 22 and that is signed also on 20 March 22. But that has been received to me via email on 21st March 22. So 7 days need to be counted from the receipt of such notice under 148AB. So in this case, since the notice in my email is received on 21st March, I need to count the days from 26, 27. So this is less than 6 days. This is a 6 days time. So considering that, I can say that proper 7 days time has not been given to me. Another example which I am giving to you. Let's suppose an officer has issued notice on 20 March that has been received to me on 20 March itself. But बिफोर एक्सपायरी ऑफ 7 days, जहां तक मुझे नोटिस का रेस्पॉन्स करना था, और या तो मैंने 7 days में किया नहीं, या फिर मैं करने ही वाला था और उससे पहले मैंने नोटिस भी रिप्लाई कर दिया, बट आई ऑब्जर्व दैट ऑफिसर ने जो स्पेसिफाइड अथॉरिटी से अप्रूवल ली है, दैट हैज बीन टेकन ऑन 26 मार्च इटसेल्फ या उससे पहले. तो आई कैन से कि जब ऑफिसर ने प्री डिटरमाइंड माइंडसेट से विदाउट कंसिडरिंग माई रिप्लाई स्पेसिफाइड अथॉरिटी से अप्रूवल ले लिया, then there is no point and there is no actual opportunity given to assessee to respond against that notice. So that also need to be observed while handling the reassessment proceeding. कब नोटिस इशू हुआ है, कब मुझे मिला है, कब एक्चुअल में ऑफिसर से साइन हुआ है,
स्पेसिफाइड अथॉरिटी से अप्रूवल कब लिया है. So basis that we can make certain grounds कि क्या प्रोसीजर ठीक से फॉलो हुआ है नहीं हुआ है. So I'm reading it further. Being not less than 7 days, but not exceeding 30 days from the date on which such notice is issued. So officer is having power to issue such notice, giving me opportunity of not less than 7 days, but maximum 30 days time. And that 30 days time may also be extended basis the application of the assessee. So, and what is the drawback or any benefit which is to assessee or assessing officer by extending the time limit? So, if we read the proviso 5th and 6th of 149, जो टाइम लिमिट बताता है 148 का नोटिस इशू करने का, जितना टाइम पीरियड 148 ए बी के प्रोसीजर में लगेगा, चाहे से ऑफिसर ने दिया चाहे असेसी ने उस टाइम पीरियड को सीक किया, एक्सटेंशन सीक किया, that need to be added in the period of issuance or serving 148 notice. तो आपके पास पावर है एक्सटेंशन लेने का, but that period need to be added while reckoning the number of days or limitation period of serving 148 notice. Coming to point C, consider the reply of assessee furnished, if any, in response to show cause notice referred to in clause B. So first thing which we need to understood here, 148 AB का जो नोटिस आया, तो वो मैंडेटरी नहीं है कि एसएससी उसका रिप्लाई करे. वो एक सजेस्टिव मैनर में लिखा हुआ है एंड उसमें आगे लिखा हुआ भी है कंसीडर द रिप्लाई फर्निश्ड इफ एनी. बट पॉइंट इज दैट इफ assessee has furnished certain response and that has not been considered by the assessee, then this may be an issue. I just give you a live example of this. आपने रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग के नोटिसेस देखे होंगे और उसमें देखा होगा कि इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो ट्रांजैक्शन है that has been captured by the assessing officer, कि आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी ली थी और उसकी जो इंफॉर्मेशन है असेसिंग ऑफिसर के पास दो सोर्स से हैं. फर्स्ट इज दैट स्टाम्प ड्यूटी का जो रजिस्ट्रार ऑफिसर है उसने एसएफटी के परसुएंट इंफॉर्मेशन दी. सेकंड इज प्रॉपर्टी पे टीडीएस कटा हुआ है तो वहां वो 26 ईयर्स से इंफॉर्मेशन आई. तो व्हाट ऑफिसर हैज डन, लेट सपोज प्रॉपर्टी की वैल्यू 60 लाख रुपी है. So he has issued the notice under 148AB alleging that why income of 1.2 CR should not be considered as escape income. क्योंकि उसने क्या किया कि जो इंफॉर्मेशन रजिस्टर से आई जो टीडीएस डेटा से आई दोनों को ऐड करके 1.2 का अलेज किया. Now assessee has responded that and he has furnished the entire backup material कि उसने प्रॉपर्टी कैसे परचेज की थी, उसका सोर्स क्या था और वो एक्चुअल में बैंकिंग चैनल से थी. But without prejudice, the assessee has mentioned that the escapement of income should not be considered as 1.2 CR, that should be limited to 60 lakh, क्योंकि एक ही चीज को आप दो बार ऐड कर रहे हो. What officer has done, he has mentioned the line which is a very fancy line in the records of department, that the response of assessee has been perused, but that has not been considered as tenable. So considering that assessing officer has issued the notice, the order under 148A-D, mentioning that this is the fit case to issue 148 और उसने allege जो किया escapement of income 1.2 CR का किया. Can we say that assessing officer has considered my reply? The answer is no, because this is apparent, which is coming from the record itself कि same property जो 60 लाख की है और उसके दो सोर्स हैं, आपने उसको ही 1.2 CR और जिसमें कि assessee ने उसका रिप्लाई भी किया है. So I don't think so that assessing officer has actually perused the response of the assessee. So this is the violation of clause B of section 148A. So we can say that procedure actually have been not followed properly. Coming to clause D, decide on the basis of material available on record, including reply of the assessee, whether or not this is a fit case to issue notice 148 by passing an order with the prior approval of a specified authority. That I have underlined and highlighted also, that specified approval कौन सी अथॉरिटीज ली है, that is also need to be checked कि कहाँ पे
पीसीआईटी से लिए है, कहाँ पीसीसीआईटी से लिए है, और किस केस में कौन सी अथॉरिटी से लेना है, दैट इज टू बी चेक। तो 148A का प्रोसीजर जो है, दैट इज अगेन अमेंडेड वाइड फाइनेंस नंबर 2 एक्ट 2024, that I'll mention from reading of law from my book itself. But before that, I just want to highlight 2 or 3 issues on which I filed writ petition also recently in April before High Court. So if we see the time limit to complete the reassessment proceeding under 147, and we see the time limit to issue the notice under 148 also. So let's suppose मेरा जो केस है 50 लाख से ऊपर का है, and then what happened that assessing officer by following the procedure under 148A, assessing officer जो नोटिस इशू किया था 148A का, लेट सपोज 20 मार्च को किया था, अगेन 20 मार्च का 148A का प्रोसीजर फॉलो करने के बाद उसने टाइम दिया असेसी को रेस्पॉन्स करने का, एंड बाय फॉलोइंग दैट प्रोसीजर असेसिंग ऑफिसर ने जो 148 का जो नोटिस इशू किया वो ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 22 किया। तो if we see in serial number 2, the time limit to conclude the proceeding in this case, this is 12 months from the end of the financial year in which notice under 148 is served. Since मेरे केस में 1 अप्रैल 22 के बाद 148 का नोटिस आया है, तो considering that the end of the financial year comes to March 23 and वहां से मुझे 12 months काउंट करना है, तो limitation period is March 24 in my case. However, if we read the proviso 5th and 6th of 149 also, along with the limitation period under 153(2), when the assessee is identified in March 22, ideally the procedure and the limitation period should be started from the end of March 22 itself. What is the issue which is pending for Delhi High Court also, कि जो limitation period 12 months का यहाँ से count हो रहा है, that should be counted from March 22 but not March 23. So ideally the assessment order passed in March 24, that is time bar. So this was the first issue in the writ petition. Second issue is that the 148 notice was also time barred in view of 5th and 6th proviso to 149 section. तो जैसे अब हम 5th and 6th proviso को अगर रीड करते हैं, so provided also that for the purposes of computing the period of limitation period as per section, the time or extended time allowed to assessee as per show cause notice, as I mentioned earlier कि 148A(b) का जितना टाइम पीरियड होगा वो यहाँ पे एक्सटेंड हो जाएगा. This we can understand in a layman language, जो 5th प्रोविजो कहता है. Now 6th प्रोविजो says कि अगर 5th प्रोविजो का टाइम लिमिट एक्सटेंड करने के बाद, provided also that where immediately after exclusion of period referred to in immediately preceding proviso, which is 5th proviso, the period of limitation available to assessing officer for passing an order under clause D of 148 does not exceed 7 days. Then in that scenario, the remaining period shall be extended to 7 days. So 5th proviso का टाइम पीरियड एक्सक्लूड करने के बाद अनदर 7 days का टाइम असेसिंग ऑफिसर को मिलेगा 148 का नोटिस इशू करने के लिए. सो इसको मैं सिंपल मैनर में एक एग्जांपल से बताता हूँ जो कि लाइव एग्जांपल है. तो मेरे केस में असेसमेंट ईयर 1920 और 50 लाख से नीचे की इनकम अलाइज है. To issue 148 notice is 3 years. So assessment in 1920, ideally the 148 notice should be served by 31st March 23. 5th proviso के अकॉर्डिंग जब मेरा नोटिस आया which has been issued in this case on 20 March और मुझे टाइम लिमिट मिला 28 मार्च तक रेस्पॉन्स करने का, बट असेसी ने एडजॉर्नमेंट चेक करी और रेस्पॉन्स फाइल किया 31st मार्च तक. एंड इफ यू रिकॉल द प्रीवियस स्लाइड वेयर आई मेंशन कि जितना टाइम पीरियड असेसी सीक करता है एक्सटेंशन का, that need to be added while recording the time period to issue
नोटिस 148, सो मेरे केस में 11 डेज का टाइम यहाँ एक्सटेंड हो गया. सो आइडली 31 मार्च का जो टाइम पीरियड था दैट बिकम 11 अप्रैल, एंड 6 प्रोविजो के परसुएंट 7 डेज का एडिशनल टाइम और उसमें ऐड हो गया. So ideally 18 April 23 was the date on which 148 notice should have been served. But in my case, the notice under 148 should have been issued by 18 April. If the notice is issued on or after 19 April, the notice under 148 should be considered as issued beyond limitation period. So that is also an issue which is mentioned in writ petition, and that is pending before Delhi High Court. So these type of grounds, because if we see apparent reading of limitation period to conclude the proceeding, we can say that 148 का जो notice आया उससे 12 months from the end of the financial account कर लो. But we need to understand the objective of law also while handling the proceeding. अगर ऑफिसर ने 1 अप्रैल या लेट्स सपोज अप्रैल मंथ में 148 का नोटिस इशू किया, है टू कंक्लूड द प्रोसीडिंग, आइडली या तो उसको 148 का जो नोटिस है वो ही मार्च में इशू करना चाहिए बाय अप्लाइंग द डॉक्ट्रिन ऑफ डिलेड बैक थियरी, विच सेज कि अगर आपको फिफ्थ और सिक्स प्रोविजो से पता लग रहा है कि इतना टाइम पीरियड एक्सटेंड होना है, देन यू शुड प्री प्लान योर वर्क. ऐसा नहीं कि आप 31 मार्च पे उठ के एंड देन 148 का नोटिस इशू हो गया. So that is not the valid, because if you know the law and that says that time period need to be excluded or extended, then ideally the procedure of 148 should be advanced in that manner, so that 148 notice should be served within March itself. So this is in reference to proceeding from 1st April 21 to 31st August 2024. As I mentioned that in haste, the assessing officer has issued certain notices on 31st August 24 without find कि क्या प्रोसीडिंग पेंडिंग है, कौन सी रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग स्टिल पेंडिंग है. तो उन नोटिसेस में जहां 148 इशू हुए हैं एंड मेरी रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग पेंडिंग है, स्टिल वी कैन हैव ए chance and case to file writ petition and liatis request. Now coming that the procedure again has been amended from 1st September 2024 in pursuant to which अभी हम देख रहे हैं जो मार्च 25 में नोटिस आ रहे हैं, चाहे से वो 148 के नोटिस आए हैं और चाहे से वो 148A के नोटिस आए हैं. सो व्हाट प्रोसीजर हैज बीन अमेंडेड नाउ, कि पुराने प्रोसीजर में अगर हम देखते हैं, नाउ आई वांट टू रिकंसाइल दिस द प्रोसीजर बिफोर फाइनेंस एक्ट 24 and I am reading the amended provision from the act with me. So पहले वाले प्रोसीजर में वो 7 days 30 days वाला टाइम था, बट अभी जो अमेंडेड प्रोविजन है विच सेज कि 148A 1 सबसेक्शन में नोटिस असेसिंग ऑफिसर देगा और उसके साथ मटेरियल्स भी देगा जो उसके पास है, एंड विच सजेस्ट दैट इनकम इज एस्केपमेंट इनकम इन द केस ऑफ एसएससी and will provide an opportunity to assessee to respond. कोई टाइम लिमिट नहीं है, बट टाइम लिमिट अब किस चीज का है, 148 नोटिस इशू होने का. सो अर्लियर द टाइम लिमिट वाज 3 years and 5 years. Now this is 3 years plus 3 months, 5 years plus 3 months. So 2 असेसमेंट ईयर के नोटिस जो अभी इशू हुए हैं मार्च 25 में, फर्स्ट इज असेसमेंट ईयर 1920 क्योंकि उनके 5 years एक्सपायर हो रहे थे मार्च 25 पे, एंड सेकेंड इज असेसमेंट ईयर 21-22 बिकॉज उनका टाइम लिमिट जो 3 years वाला एक्सपायर हो रहा था वो भी मार्च 25 पे एक्सपायर हो रहा था. So these are the 2 assessment year for which notices have been issued by March 25. So and 148A का जो नोटिस है वो 5 year 3 months या 3 years 3 months में इशू होना है, सॉरी 5 years and 3 years में इशू होना है. जो 148 का नोटिस अब आएगा, द टाइम लिमिट इज 5 years 3 months and 3 years 3 months. तो जैसे पहले लॉ था कि जितना 148A का प्रोसीजर में टाइम लगा उतना आगे एक्सक्लूड हो जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा, इस प्रोसीजर में ऐसा नहीं है. सो दिस इज लाइकली
एंड दिस मे बी हैपन दैट जून 25 में हम फ्रेश 148 के नोटिस देखे हैं जिसमें 148 ए का प्रोसीजर फॉलो करने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अब कोई एक्सक्लूजन नहीं है, डायरेक्टली टाइमलाइन से है कि 148 ए का भी शो होना है, 148 का भी शो होना है। सेकेंड इज कि जो 148 ए वन के परसेंट जो अमेंडेड लॉ है उसमें जो भी नोटिस इशू होगा दैट नीड टू बी रेस्पॉन्डेड बाय असेसी, एंड बेसिस दैट असेसिंग ऑफिसर विल इशू ऑर्डर अंडर 148 ए 3। जो पहले 148 ए डी था, अब 148 ए 3 में notice need to be order need to be passed by the assessing officer, again by taking the approval from specified authority. So जो अभी के नोटिस आए हैं उसमें दो तीन चीजें हैं विच आई जस्ट वांट टू हाईलाइट एंड देन कंक्लूड। सबसे पहले तो जो इंफॉर्मेशन जिसके बेसिस पे ऑफिसर बोल रहे हैं कि हम सजेस्ट करते हैं कि आपका इनकम एस्केपमेंट है। सो व्हाट आई ऑब्जर्व्ड एंड द केसेस विद मी, असेसिंग ऑफिसर्स ने क्या किया है कि जितना आपका 26 ईयर्स में ग्रॉस रिसीट्स आ रहा है उसी को अपेरेंटली मान लिया दैट इज योर एस्केपमेंट ऑफ इनकम, एंड उसका कंपैरिजन किया है कि आपने टोटल इनकम अपनी रिटर्न ऑफ इनकम में क्या फर्निश किया है। सो लेट्स सपोज मेरा 26 ईयर्स में 1 CR की ग्रॉस रिसीट है, और मैंने परचेज या जो भी एक्सपेंडिचर हटा के वो टोटल इनकम 5 लाख फर्निश करी। तो व्हाट ऑफिसर इज रिकंसाइलिंग कि 1 CR की आपकी इनकम है बट आपने रिटर्न ऑफ इनकम 5 लाख से फर्निश करी, विदाउट अप्लाइंग माइंड अगेन कि that is my gross receipt and that need to be concluded, and ultimately I need to come at taxable income after making certain allowances, disallowances, and considering the effect of profit and loss account also. So how these two numbers can be reconciled, total income and gross receipt? So basis that, my suggestion is to handle the notices in a very well manner to reconcile the facts in your case, क्योंकि 148 के प्रोसीजर के टाइम पे जितना आप रिकंसाइल्ड रेस्पॉन्स दोगे उतना ज्यादा बेटर हैंडल कर पाओगे जब 148 का नोटिस आएगा और प्रोसीडिंग चलेगी। Although I have observed certain procedural gaps also in these notices and which I have noted down कि जैसे ही 148 का नोटिस आएगा then we can plan to file writ petitions also before High Court. Another thing what I planned in my cases, जैसे लेट सपोज 148 के जो नोटिस आए 31 मार्च 2025 पे, तो फॉर एग्जांपल 29 को आया, 30 को आया, so in one of the cases I filed in क्योंकि वहां से जितना भी 143(2) का नोटिस इशू होने का टाइम लिमिटेड दैट इज जून 25 इन माय केस। If notice under 143(2) will not be issued by end of June 25, then proceeding may be held as invalid proceeding. This is first point. Second thing is, in another scenario what I have done कि 31 मार्च 25 पे मैंने रिटर्न फाइल किया, बट उसको जब पोस्ट किया बेंगलोर तो अल्टीमेटली जो डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड में वैलिडिटी आई उसकी वो आई 31 मार्च 2025 के बाद, बट इनकम टैक्स रूल के अकॉर्डिंग विद इन 30 डेज तो मैं वैलिड कर ही सकता हूँ, अपनी रिटर्न को वेरीफाई कर ही सकता हूँ। तो आइडली द डेट ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न शुड बी कंसिडर्ड एज 31 मार्च 25 इन माई केस। तो आइडली 3 मंथ्स का जो टाइम है 143(2) इशू होने का डेट शुड बी रिफंड फ्रॉम द 31 मार्च 2025 इन माई केस। सो अगर नोटिस इस केस में भी 143(2) का 30 जून 25 के बाद आता है दैट मे बी हेल्ड एज इनवैलिड नोटिस एंड प्रोसीडिंग मे बी बेस्ट। तो दिस इज समथिंग कि जो 148 ए के नोटिस हैं और अभी नॉन रेस्पॉन्डेड है, कोई रेस्पॉन्स नहीं है बोलिए, तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लान एंड सबमिट द प्रॉपर रेस्पॉन्स रिकंसाइलिंग द फैक्ट्स, क्या फैक्ट्स हैं, देन फिर अगेन फैक्ट्स के बाद एंड द रेस्पॉन्स टू 148 ए शुड बी क्रिस्प एंड टू द पॉइंट। ऐसा नहीं है कि आपको किसी जजमेंट का रेफरेंस लेना है, कहीं कुछ कोई कोट करना है, कोई जजमेंट, सिंपली आपको फैक्ट रिकंसाइल करने हैं व्हाट ऑफिसर हैज अलेज्ड एंड व्हाट इज इन योर केस। सिंपल 2-3 पेज रेस्पॉन्स शुड बी सफिशिएंट बेसिस की आपके केस में किस तरीके के फैक्ट्स हैं, क्या केस है,
And one more point which I have observed in the law, and I would like to take this also in some of the cases, that the law says that if return of income is furnished within the time prescribed under 148 notice, then this return will be considered as return filing under section 139. So I'm reading the law, which is 148(2). The return of income required under subsection 1 of 148 shall be furnished in such form and verified in such manner, and setting forth such other particulars as may be prescribed, and the provision of this act shall apply accordingly, as if such return were the return required to be furnished under section 139. The proviso further says that provided that any return of income required to be furnished of the period specified in the notice under section 140 under said subsection shall not be deemed to be written in the 139. So if you are considering the return furnished in response to 148, and that is the return within the time limited as per 148, and you are considering that the return under 139. So ideally, if this is the case of fresh assessment, so this is the case of fresh assessment for department as well as assessee. So my interest meter under 234 ABC should be start from the relevant assessment year in which I am filing the return under in the response of 148, but not from the original assessment year. Otherwise, there is no relevance to mention this thing कि आपकी जो return है that shall be considered as 139 की return. So at least if that is the case, for example, I give you an example. किसी ने प्रॉपर्टी परचेज की लेट्स सपोज 70 लाख की, और उसकी जो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू थी वो थी 1 CR. So as per the provision of section 56, 30 lakh should be considered as my income, and that is as per law itself. So I cannot deny my tax liability, but still जो उसपे interest का मीटर चला, that is a pain point for the assessor. तो कैन आई से कि अगर आप इस रिटर्न को 139 की रिटर्न मानते हो, अगर मैंने विद इन टाइम पीरियड फाइल करी है, तो मेरा जो इंटरेस्ट है 234B का ए का, वो इस असेसमेंट ईयर से लगना चाहिए जिसमें मैं 139 148 के अगेंस्ट रिटर्न फाइल कर रहा हूँ. So this is something which I observed and would like to take if any case would be there. I do have one case, so I would like to take this ground also. Let's see that how it works. But this is something which I have observed in the law, and there are certain other procedural gaps which I have observed in this proceeding under 148A, and the notices have been issued in March 25, and that I noted down for certain writ petitions. So if any question, so I would like to take that up. Thank you, Vimanshu, for sharing your insights that too with real life examples. Now we'll be having a quick Q&A session. I will be asking the questions asked in chats. There's one question from DK Jha. Is SCN issued under Can I section? can I see the Q&A box? Yeah, you can open the chat box and the questions will be there. Bhimanshu ji, basically the first question asked by BK Jaji, that is SOCO's notice issued under section 148AB by judiciary assessing officer is valid? So that is the controversy as of now before the Supreme Court, because if we read the provision under the Act, read with notification that has been, I believe so, of 2022. So the issuance of notice of 148, the entire proceeding need to be done by faceless assessing officer. But what we are observing that 148A का जो procedure है, that is done by jurisdictional assessing officer, and then 144B का notice issue करके देन वो ट्रांसफर करते हैं राइट्स फेसलेस असेसिंग ऑफिसर को. या फिर अभी जो रिसेंटली असेसमेंट प्रोसीडिंग कंक्लूड भी हुई है, उसमें जो प्रोसीडिंग कंक्लूड भी हुई है वो जुडिशियल असेसिंग ऑफिसर ने कंक्लूड की है. सो
that is not reconciling with the law and the notification. So Bombay High Court the judgment hai, that is in favor of assessee on this ex-aware, but the Delhi High Court has taken the different view on this, and that is against the assessee. So matter is before Supreme Court and pending for further adjudication. Okay. And the next question asked by Tanisha Agrawal ji, that is, can a notice under section 148A be issued in case of search and seizure? So there are exclusion under 148A that search and seizure cases should be excluded while following the 148A procedure, and that is a valid point also that I have also noted down. But अगर हम लॉ का लैंग्वेज पढ़ते हैं और वो एक्सक्लूड करता है तो दे आर 4 क्लॉजेस जिसमें ऊपर के 2 क्लॉजेस जो हैं दैट इज इन द केस ऑफ असेसी जिसके यहाँ पे सर्च हुई है, एंड सी एंड डी क्लॉज इन द केस वेयर जो थर्ड पार्टी है, या फिर जो अभी वाला भी जो प्रोसीजर है 148A का उसमें भी एक्सक्लूजन है कि आप 148A का प्रोसीजर करने का जरूरत नहीं है, जहाँ पे 135A का स्कीम नोटिफाइड है और उसके अकॉर्डिंग असेसिंग ऑफिसर के पास इंफॉर्मेशन। सो जो पुराना वाला लॉ है इफ यू रीड माइन्यूटली सो दैट सेज कि अगर प्रायर अप्रूवल लिया है स्पेसिफाइड अथॉरिटी का कि इनकम एस्केपमेंट है एसएससी के केस में, देन उस केस में 148A इशू करने का कोई लॉजिक नहीं है, so we may take a valid ground. So this is a relevant point which need to be noted. I believe so that that has been answered. अगर कोई उनका further question है इसमें, because this is a very relevant point, so you can unmute her and she can ask. Because I'm reading the law says that the assessing officer is satisfied with the prior approval of principal commissioner or commissioner that any books of account or documents seized in such cases, so that pertains to information pertaining to relate to assessee. So उस case में this is excluded to be followed 148A procedure in view of first proviso to 148A. Thank you, Bhimanshu, for answering the questions asked by our audience. I would like to invite our session facilitator, CEO Uttam Modi, to deliver vote of thanks to our guest speaker. थैंक यू विमांशु जी, आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया, फेडरेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक अफेयर्स को दिया, और 148 जो सेक्शन है रीअसेसमेंट है उसके ऊपर हाईलाइट किया। जैसा कि वर्चुअल सेशन है तो मैं आपको सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन यहाँ पर सिर्फ प्रेजेंट कर सकता हूँ, पार्टिसिपेशन ना कह के मैं एक टोकन ऑफ थैंक्स बोलूंगा, क्योंकि मजबूरी है हमारी भी कि भाई वर्चुअल सेशन है, तो डेफिनेटली बट हम ये जो टोकन ऑफ थैंक्स है आपको जरूर जल्दी डिलीवर करवाएंगे घर पर। थैंक यू विमांशु जी, और Thank you so much थैंक for यू। FIEA and entire team for inviting me and giving me a chance to present this topic, बस which is a आपका very hot समय topic. मिलता रहे और ऐसे ही हम लोग नॉलेज शेयर करके डिस्कशन करते रहें, और जो भी प्रैक्टिकल लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है उनको डिस्कस करने से ही रिजोल्यूशन मिलता है कहीं ना कहीं। तो हम ही लोग आपस में नॉलेज शेयर करें तो दैट इज गुड कि भाई आपस में जो भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है उसको शेयर करें। तो सेशन को आगे की तरफ बढ़ाते हैं, और वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं अगर मैं अपने को कलीग अपने बड़े भैया विनीत जैन जी को इनवाइट करना चाहूंगा। विनीत जैन जी, प्लीज यू आर इनवाइटेड फॉर वोट ऑफ थैंक्स। Thank you. Thank you, Uttam bhai. Good evening, everyone. It's a great pleasure to deliver the vote of thanks on the behalf of the Federation of Indian Economic Affairs. First and foremost, I would like to extend our gratitude to our distinguished speaker, Mr. Mohit Golcha ji, and Bhimanshu Kansal ji, for sharing their invaluable insights on the GST assessment and income tax reassessment. Vimanshu ji has put thorough lights on the section 148, जो कि आजकल बहुत confusing चल रहा है कि उसमें कैसे करना चाहिए और क्या होना चाहिए। तो Vimanshu ji has delivered a wonderful session here, and your in-depth knowledge and practical examples you have put through in the session is fabulous. And I just also like to thanks to our program moderator Jay and Mansi ji
and session moderator Uttam ji, and of course the final thanks to founder president FIEA Abhishek bhai. Thank you so much, Vineet bhai, for such a wonderful vote of thanks. Thank you so much. Thank you ji. Thank you. Thank you one again. उत्तम भाई आपका म्यूट है. थैंक यू विनीत जी, थैंक यू विमांशु जी, और हमारे मॉडरेटर जय और मानसी जी को थैंक यू ऑल ऑडियंस जिन्होंने अच्छे से सुना और इंटरेक्टिव बनाने के लिए अपनी क्वेरीज पुट ऑन करी. थैंक यू. Thank you so much.